You know, 1 in 3 women and 1 in 4 men experience relationship abuse in their lifetime. We see relationships just like how it's usually shown in our movies and serials. Either a perfect family like Suraj Bharjatiya's films, या फिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी टाइप टॉक्सिसिटी, जहां हर कोई हर समय षड्यंत्र ही रच रहा है. बट एक्चुअल में इन रियल लाइफ रिलेशनशिप्स आर नॉट दैट ब्लैक एंड व्हाइट, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. इसीलिए तो इतना सिंपल नहीं होता समझना, खासकर कि कब वो टॉक्सिक हो जाते हैं. टॉक्सिक बोले तो जहरीला. A relationship is toxic when your well-being is threatened in some or the other way, emotionally, psychologically, or even physically. You know, being in a toxic relationship for long can affect both mental and physical health. It can cause real damage to your self-esteem and can cause depression and anxiety. एक दूसरी स्टडी के हिसाब से stress and negative relationships can directly affect the cardiovascular system. मतलब कि एक toxic relationship में दिल लगाने से दिल का दौरा भी पड़ सकता है. But toxic relationships are not just limited to boyfriend, girlfriend, or partners. This could be anyone who you are close with or who takes up your time. Siblings, parents, friends, even आपके office colleagues. Now, no two relationships are the same, right? But some basic key characteristics differentiate any healthy relationship from a toxic one. Trust, respect, open clear communication, honesty, consent, healthy boundaries, empathy are some of them. मूवी से ही कुछ एग्जांपल लेते हैं. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. Here कल की is possessive, insecure, doesn't trust her fiancé, उसकी बैचलर्स ट्रिप पर ही पहुंच गई बंदी. Basically not letting him be who he is. Toxic, थप्पड़. The relationship was not toxic just because of that थप्पड़. The guy was too absorbed in himself to see the pain and struggles of his partner. कुछ होता है. Tomboy Kajol tried to change herself to get the attention of Shah Rukh and ended up being ridiculed. Despite probably knowing that Anjali loved him, ये भैया हॉट लड़की के पीछे चल दिए. चलो वो ठीक है. 8 साल बाद he only liked her cause she had long hair and wore a साड़ी. केतरी जी कह दिया ना, बस कह दिया. No open communication. Toxic. उड़ान. यहाँ रोनित रॉय का कैरेक्टर, I don't even need to say anything. वैसे any form of physical abuse in any relationship is a big red flag anyway. Spider-Man. A boss humiliating you in front of everyone all the time, belittling you, calling you names, that is toxic. Hits right in the self-esteem and confidence. Kapoor and Sons. Fawad was made to choose between his mother and his sexuality. That's clearly unhealthy. Usually emotional abuse is the core of most toxic relationships. और क्या है ना, the thing with emotional abuse is that it can go on for a long time, बिना आपको पता चले कि चल क्या रहा है. In fact, researchers believe that it is more damaging than physical abuse because it can undermine how we think about ourselves, our whole belief about who we are. It can leave wounds that can affect us for a long time without us sometimes realizing. लेकिन उसके बावजूद हम में से किसी को नहीं सिखाया जाता how to read the signs and then how to deal with it. I mean, normally we all operate looking at our role models in life, नहीं? बचपन से जो घर पर माहौल होता है, आसपास जो देखते हैं, उसी से सीखते हैं. For example, snooping on someone's phone, not healthy at all. It's pure invasion of privacy. But India में, especially with women, phone check किए जाते हैं in the name of protecting them or something. अगर आप ऐसे घर में रहे हों where invasion of privacy is normalized, तो आपके लिए तो वही normal है, and you will probably do something similar in your future relationships as well. तो हम अडल्ट तो हो जाते हैं, बट अडल्टिंग क्या होती है वो ट्रायल एंड एरर पर छोड़ दिया जाता है. तो कैसे पता लगे कि कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है? वी गॉट टू कीप एन आई आउट फॉर सम बेसिक साइंस. द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट इज persistent unhappiness. If a relationship stops bringing joy and instead consistently makes you feel sad, angry, anxious or resigned, it may be toxic. हमें कई बार लगता है कि बेस्ट रिलेशनशिप वो होते हैं जहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, बट एक्चुअल में लंबे रेस के घोड़े वो रिलेशनशिप होते हैं जहां यू नो हाउ टू आर्ग्यू एंड रिजॉल्व डिफरेंसेस इफेक्टिवली रादर देन पुशिंग समथिंग अंडर द रग टू मेंटेन पीस. एक स्टडी के हिसाब से किसी भी कपल का कम्युनिकेशन स्टाइल वाज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रेस, कमिटमेंट एंड पर्सनैलिटी इन प्रेडिक्टिंग वेदर मैरिड कपल्स वुड इवेंचुअली डिवोर्स. इस सब के अलावा किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. वी ऑल नीड टू बी काइंड एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स द अदर पर्सन एंड थिंग्स दे केयर अबाउट. वी गॉट टू ट्रीट each other as equals, as humans. If that is missing, then at least for me that is an immediate red flag. लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी लाते हैं, they often have a reason for their behavior, even if it's subconscious. शायद वो खुद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हों, either romantically or as a child. Maybe उनकी अपब्रिंगिंग सपोर्टिव नहीं रही हो, या उन्हें स्कूल में बुली किया गया हो. They could even be suffering from an undiagnosed mental health disorders. अगर बचपन से ही कभी क्लियर ओपन कम्युनिकेशन रोल मॉडल्स ना रहे हों. For example, if a father breaks down at slightest of argument and starts screaming in anger, and the mother always cows down, कि फादर के चिल्लाते ही वो बात मान जाती हैं, तो there is a big chance that the kid becomes like the father wherever he can dominate, usually with the close ones, and gets dominated like the mother wherever he is not the one in power. तो किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में किया जाए? Toxic workplace में you might have to speak to your superiors about it. Of course, there is also an option to quit and move, though this is sometimes not as easy. Toxic friendship के केस में you may need to simply decrease the time you spend with the person. But close friends or family का क्या? You can't just quit them. In close relationships, one should try to work everything out. Communicate assertively. If possible, understand why the person is toxic. हो सकता है आपका भी उस रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाने में कुछ योगदान रहा हो. After all, it takes two to tango. Basically, सिंपल भाषा में समझें तो अगर कोई रिलेशनशिप makes you feel worse rather than better, then it can become toxic over time. And whether the bad outweighs the good, ये तो आप खुद ही पता लगा सकते हैं. Tell me in the comments below what are your thoughts on this, and like and share this video with as many people as possible.